Let us directly start with the MCQs from this chapter, that is projectile motion. तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर के जो कुछ कंसेप्ट्स है तो उनको डिटेल में देखा था ऑलरेडी, और उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे अभी। उसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है या एमसीक्यूज है तो वो हम अभी देखेंगे फटाफट। ओके, यस, I hope I have already shared this PDF file with you in the app. ऐप के अंदर आपको ये फाइल मिला होगा, आई होप सो। और उसके अंदर जो क्वेश्चंस है एमसीक्यूज, तो उसमें से आपने कुछ ट्राई किए रहेंगे, होप सो। सो लेट अस सी सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस सेम ओनली। उससे पहले मुझे अच्छा होगा कि अगर आप में से कुछ किसी को अगर डाउट है कुछ इसमें से, अगर आपने कुछ सॉल्व किए हैं एमसीक्यूज तो वो अगर पूछ लेंगे तो बेटर होगा। Yes, see here. See this question number 2 here. Try it and read it once first. A particle of mass m is projected with a velocity v making angle 45 degree with the horizontal. The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when it is at the highest point or maximum height h is. Already ये हमने कल किया था, याद है आपको? एक्सप्लेनेशन के टाइम मैंने बताया था कि how to define the angular momentum. If you remember carefully, suppose this is the particle which is projected with the velocity u initially and it reaches at the highest point here at this point. ठीक है, इस पॉइंट पे वो पहुंचता है, तो उस समय उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे ढूंढ के निकालेंगे? इन जनरल हाउ वी फाइंड द एंगुलर मोमेंटम is linear momentum multiplied by the moment arm. Here at this point we can see the momentum of the particle, linear momentum of the particle will be directed like this. If we extend this line in the backward direction here, then at what distance this line is going to be from the origin is same as this much, which is going to be actually h, which is the maximum height. It is denoted by small h here in the question, so we have to use this small h only. Okay, so ये हो गया distance small h, and at the same time what is the momentum of the particle p here? So it will be actually mass into velocity at this point, correct? And already we have seen last time that if suppose the particle is projected at an angle theta initially, then by going at the highest point it has the velocity which is u cos theta. याद है, अगर वो u इस वेलोसिटी से अगर हम थ्रो करते हैं थीटा एंगल पे, तो उसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, u cos theta और u sin theta, out of which u cos theta component remains constant and u sin theta component goes on decreasing and ultimately gets vanished at highest point, and that's why there is no u sin theta component at the highest point here. Only u cos theta is left as it is at the highest point, and that's why we can say that at the highest point the velocity of the body is going to be u cos theta, whereas initial velocity of the body is going to be u. Okay, तो यहाँ पे जो v है तो v कितना बन गया? u cos theta के बराबर बन गया, तो p फिर कितना बनेगा? p will be written as m into v, where v is going to be u cos theta because the particle is going to be at the highest point of its motion, and that's why the momentum p actually becomes m u cos theta. And now if you want to find out the angular momentum, that angular momentum is simply the moment arm, which is h here, multiplied by p, so that we can just get it as r into p.
where r is going to be h and p is going to be mu cos theta, which we have just derived. And उससे भी आगे जाके थीटा जो है, तो थीटा here is going to be 45 degree. Just check. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? थीटा is going to be 45 degree. So if we just put it here, then we can get cos of 45 degree. How much it is going to be? तो देखो h into mu into cos of 45 degree. It becomes h into mu into 1 by root 2. Okay, that means we want it in terms of h alone. We don't want v here or u here. Okay, so what is the relationship between h and v? h के लिए हमारे पास फॉर्मूला है h is equal to u square sin square theta अपॉन 2g, बराबर है? तो ये अगर फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा के बदले अगर हम यहाँ पे 45 डाल देंगे, तो साइन स्क्वायर 45 क्या बनता है? साइन 45 becomes 1 by root 2 and its square becomes 1 by 2 and that 1 by 2 combined with this 2 becomes 4 and hence we can get that u square by 4g. Just check. And if we put this value of h here in this formula, then we can get this u cube mu cube upon 4 root 2g जो हमको कल मिला था. Yes, which is already there in this option number 2. Just check. देखो यहाँ पे अगर हमने ये h का वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो ये क्या बनेगा? तो बन जाएगा h के बदले u स्क्वायर, तो बन जाएगा u स्क्वायर अपॉन 4g इंटू mu अपॉन रूट 2. करेक्ट है? जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या बनेगा. So it will be actually m into u cube upon 4 root 2 into g. Just check. And already we have proved this in the last lecture only. Okay, ठीक है. ये समझा? इसमें कुछ डाउट है और? चेक करो एक बार. तो ठीक है, अभी हम ये 7th वाला जो क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे. चलेगा? See there, this 7th one, question number 7. Okay, the speed at the maximum height of the projectile is root 3 by 2 times of its initial speed. Okay, of projection. Its range on the horizontal plane is. Okay, तो उसका रेंज हमको निकालना है और इट्स गिवन दैट द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट पॉइंट. तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका स्पीड कितना दिया हुआ है? रूट 3 by 2 टाइम्स ऑफ द स्पीड एट द प्रोजेक्शन. तो मतलब देखो यहाँ पे, यस, व्हाट डज इट मीन? मींस अगर सपोज ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से हमने u स्पीड से उसको थ्रो किया, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे आके उसका स्पीड कितना बनता है? रूट 3 by 2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, इनिशियल स्पीड. मतलब यहाँ पे जो स्पीड बन गया तो वो बन गया, उसको हम v बोल देंगे. सो v इज गिवन टू बी एक्चुअली रूट 3 by 2 टाइम्स ऑफ u. करेक्ट है? But already we have proved just now that the speed at this point is nothing but u cos theta. बराबर? हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना होता है? हमेशा u cos theta के बराबर होता है. तो वो अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा u cos theta must be equal to root 3 by 2 times of u. करेक्ट है? जिससे हमको u कैंसिल होके cos theta का वैल्यू रूट 3 by 2 मिलेगा. और cos theta का वैल्यू रूट 3 by 2 है, मतलब ही थीटा का वैल्यू कितना हो गया? थीटा का वैल्यू 30 हो गया. बिल्कुल. Once we get the value of theta, we can easily find out the range of projectile.
its range in horizontal plane is. So how can we get the range? Range के लिए हमारे पास वापस फॉर्मूला है r is equal to u square sin 2 theta upon 2g. Correct है? Sorry, only g. Yes, so r will be actually equal to u square, where u is u only. Keep it as it is because we want it in the answer, right? Into sin 2 theta, where theta is going to be 30. So sin of 2 theta will be 60, and that is to be divided by g as it is, so that we can be left with this here u square into sin 60. How much is sin 60? We know that it is root 3 by 2 in upon g as it is, so that we can write this as root 3 u square upon 2g, and this is going to be actually the final answer, which is already there in this option number 1. Just check. समझा ठीक से? Okay. Let us see the next. The question number 3. Just check. In case of a projectile fired at an angle equally inclined to the horizontal and vertical with the velocity u, the horizontal range will be. So that is simply the another way of asking that the angle theta is going to be 45 degree. समझा क्या इसको? कैसे? Theta equal to 45 is indirectly given here because equally inclined at an angle which is equally inclined to horizontal and vertical. What does it mean? What is the angle which is equally inclined with horizontal and vertical? तो मतलब यहाँ पे horizontal के साथ और vertical के साथ अगर वो same angle बनाता है तो इसका मतलब ये दोनों थीटा होंगे, लेकिन टोटल तो 90 है ना. तो अगर हम 2 थीटा को 90 के साथ इक्वेट करेंगे तो इससे हमको थीटा का वैल्यू कितना मिलता है? 45 डिग्री मिलता है. 45 is the only angle which is equally inclined with horizontal and vertical, right? So in that case, horizontal range will be maximum, and how much it will be? R is equal to, once again, u square sin 2 theta upon 2g. Correct है? तो अगर इसमें थीटा के बदले 45 डाल दो तो वो बनेगा u square into sin of 90, and that is to be divided by g, so that we can get this as sin 90 is 1, and hence we get this simplified as u square by g as a final. Getting it? Yes, so it will be u square by g. This is actually going to be the correct option. A is going to be the correct option. Okay, what about this 8th one? Check. What is the ratio of potential energy with respect to ground and kinetic energy at the topmost point of the projectile motion? As just we have stated last time, कल के ही लेक्चर में हमने ये देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है. What is the potential energy at the highest point of the projectile? It is mgh, बराबर, and it is also always given by the formula which we have derived last time, that it is half mu square into sin square theta. याद है कि नहीं? ये बनता है उसका हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना बनता है? So it is given by half mu square into cos square theta. If you remember, we have proved this last time. So this is going to be the kinetic energy, and this is going to be the potential energy. So what is the ratio of potential energy to kinetic energy? तो देखो potential energy upon kinetic energy will actually be equal to, तो देखो potential energy के बदले आ जाएगा half mu square into cos sin square theta, right? So here it is sin square theta, and that is to be divided by kinetic energy, which is half mu square once again into cos square theta, so that this half mu square gets cancelled, and sin square theta upon cos square theta becomes equal to tan square theta. That is going to be the final answer. That's all. इतना easy है. See this 9th one also. The ball is thrown at an angle theta with the horizontal. The range is maximum. The value of tan theta is. तो देखो थीटा एंगल पे उसको थ्रो किया और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे थ्रो किया है, और रेंज मैक्सिमम है. व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम, व्हेन थीटा इक्वल टू 45, एंड सिंस थीटा इक्वल टू 45, tan of 45 will be actually 1. So this first one will be the correct option. Yes. चलो next one. 4th question. Just check.
Fourth one, a shell is fired vertically upwards with the velocity v1 from the deck of a ship traveling at a speed of v2. The person on the shore observes the motion of the shell as a parabola. Then its range is given by. देखो यहाँ पे ठीक से ये सिंपल सा एग्जांपल है जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो कंसेप्ट हमने डेवलप किए हैं तो वो यूज होने वाले हैं. देखो, सपोज दिस इज द शिप which is already traveling with the speed of v2. बराबर, शिप का जो स्पीड है वो v2 दिया हुआ है, राइट. चलो ठीक है, v2 स्पीड से शिप ट्रेवल कर रहा है. ओके, एंड शेल इज फायर्ड वर्टिकली with the velocity v1 from the deck of a ship traveling at a speed of v2. मतलब यहाँ पे एक पर्सन जो खड़ा है वो क्या करता है, उसके हाथ में एक पत्थर है जो वो v1 स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो करता है, v1 स्पीड से. बट अभी वो चाहे या ना चाहे इस शिप का जो स्पीड है वो उसको मिल जाएगा ऑलरेडी. v2 जो स्पीड शिप का है वो उसको मिल जाएगा ऑलरेडी. और ये v1 जो है, v1 will be the vertical speed of the shell and v2 will be the horizontal speed of the shell, and because of that this shell will just travel in the parabolic path as it is expected. But this will happen in the reference frame of this observer here. ये जो फ्रेम जो बैठा हुआ है व्यक्ति है इस शिप के अंदर, उसके लिए उसका जो मोशन है वो बिल्कुल वर्टिकल होगा, मतलब सीधा ऊपर जाएगा और वो नीचे आएगा, बस इतना ही होगा, क्योंकि वो खुद भी उसके साथ आगे आगे जा रहा है. बराबर. लेकिन जबकि अगर एक शोर पे मतलब किनारे पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो उसको किस तरह से ऑब्जर्व करेगा, तो हम देख सकते हैं आराम से कि किनारे पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बन जाएगा और ये वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी बन जाएगा. एंड इसका रेंज निकालने के लिए फिर हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि हमने कल डिराइव किया था या लिख के दिया था. r इज इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ux इंटू uy अपॉन g. याद है ये फॉर्मूला, कल मैंने लिख के दिया था. अभी अगर यहाँ पे हम ठीक से देखेंगे तो ये ux जो है तो वो यहाँ पे v2 के बराबर बन रहा है और uy जो है तो वो यहाँ पे v1 के बराबर बन रहा है. वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे रहने वाला है. तो इसलिए हमको फाइनल वैल्यू मिलेगा रेंज का जो कि 2 टाइम्स ऑफ v1 into v2 that is to be divided by g, which is already there in this option number 3 here, which is going to be the correct one. Okay, we can also solve this by another method. Since this v1 is going to be the vertical component, we can equate it with u cos theta, sorry, u sin theta, right? And since this v2 is going to be the horizontal component, we can equate it with u cos theta, and hence u cos theta and u sin theta we have obtained here. So we can just have this range formula for range, which is going to be u square into sin 2 theta upon g. But as we know that sin 2 theta is already 2 sin theta into cos theta, correct है. तो अगर upon g as it is, so that if we just simplify this, we get this u square into 2, so 2u square, and here this u square can be actually written as u into u, and this sin theta can be distributed to u, and another u can be accompanied with cos theta, and it is to be divided by g. तो यहाँ पे ये जो u sin theta है तो उसके लिए हम v2 रिप्लेस कर देंगे. ये देखो, सॉरी, u sin theta के लिए v1 रिप्लेस कर देंगे और ये जो u cos theta है उसके बदले हम यहाँ पे v2 रिप्लेस कर देंगे, जिसके कारण हमको फिर से एक बार वही फॉर्मूला मिल जाएगा 2v1 v2 अपॉन g as a final. Okay, so this is again another way of doing this sum. Yes, see the next one, 10th one. A student is able to throw a ball vertically to maximum height of 40 meter, right? Then the maximum distance to which the student can throw ball horizontally is. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे वो थ्रो कर पाएगा अगर वो वर्टिकल में 40 मीटर डिस्टेंस पे अगर थ्रो कर सकता है तो. अब देखो, जब भी हम कोई भी चीज वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं ना, तो जिस स्पीड से हम थ्रो कर सकते हैं वो स्पीड u अगर है
तो कितने हाइट पे जाएगा वो बॉडी और वापस आएगा, वो कौन से फॉर्मूला से हमको मिलता है? उसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है h, the maximum height attained by the ball which is thrown upwards is actually going to be u square by 2g. If you remember, we have done this in the motion under gravity. तो motion under gravity के अंदर ये फॉर्मूला हमारे पास है, नो डाउट। तो अगर हम ये यूज करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा? देखो, तो इससे हमको मिलेगा u square is actually going to be 2gh, जिससे हमको मिलता है u is actually going to be root of 2gh, जिसको अगर हम यहाँ पे h के बदले अगर उसका वैल्यू डाल देंगे जो 40 मीटर दे रखा है, तो फिर हमको क्या मिलेगा? देखो ठीक से, कि यहाँ पे हमको मिलेगा 2 into g into h, where h is going to be 40 and g is already 10. If we take it as 10, it's okay, or just keep it as it is. So you can get it as 80g, no doubt. But at the same time, what we have to do now is the maximum distance to which the student can throw the ball in the horizontal direction. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो थ्रो कर पाएगा, ये हमको कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमको थीटा 45 रखना पड़ेगा, और जब थीटा 45 रखेंगे तो रेंज कितना मिलेगा? u स्क्वायर बाय 2g के बराबर मिलेगा, करेक्ट है? सॉरी, थीटा अगर 45 रखेंगे तो रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन g, है कि नहीं? और इसमें थीटा के बदले अगर 45 डाल दो तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 times of 45 मतलब 90, and hence you can get this as u square into sin 90, that is to be divided by g, which is going to be u square by g simply, correct है? And if you put the value of u square here, already we have that u is equal to root 2gh, means u is equal to root 80g, बराबर? तो अगर u का वैल्यू अगर रूट ऑफ 80g के बराबर है तो फिर u स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? u स्क्वायर का वैल्यू होगा 80g के बराबर। तो अगर ये 80g हमने यहाँ पे डाल दिया तो u स्क्वायर के बदले, तो वो आ जाएगा 80g अपॉन g as it is, so that this g gets cancelled and we'll be left with 80 meter as a final answer, that is given here, right, in the option number 4. Okay, see here, 3 projectiles A, B, C are thrown from the same point in the plane. Their trajectories are shown in the figure. Which of the following statement is true? Okay, तो देखो ये ट्रैजेक्टरी दिया हुआ है, डायग्राम से हमको पता चल रहा है कि all of these three projectiles are reaching at the same height, बराबर है? But they are not going to be the same range, रेंज उनका सेम नहीं है। ये देखो, अगर हम हाइट फिक्स कर देंगे यहाँ पे तो वो हाइट सभी का उतना ही है। ये देखो, फर्स्ट जो प्रोजेक्टाइल है जो ए हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे जाके गिर रहा है, राइट? दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है बी, उसका जो पाथ है वो इस तरह से हमको मिल रहा है, और तीसरा प्रोजेक्टाइल जो है तो उसका पाथ इस तरह से हमको मिल रहा है। तो भले तीनों का रेंज डिफरेंट है, लेकिन मैक्सिमम हाइट जो है वो सेम है तीनों का, ठीक है? ये देखो, तो अभी मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बराबर है? ये फॉर्मूला होता है हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। तो अगर इन तीनों का मैक्सिमम हाइट अगर सेम है, एंगल्स अलग अलग होते हुए भी, ये देखो ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, और ये एंगल अलग है, और अगर फिर भी अगर मैक्सिमम हाइट सेम है, इसका मतलब क्या होगा? u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल दीज 3 प्रोजेक्टाइल्स, करेक्ट है? ठीक है, क्योंकि g तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, g ऑलरेडी सेम है, तो इससे हमको पता चलता है कि u स्क्वायर sin square theta is constant, and which means that if we take the square root on both sides, then we can say that u sin theta is also going to be a constant. ये समझ सकते हो आराम से, u sin theta is going to be constant. तो अभी देखो, पढ़ो ऑप्शंस यहाँ पे। The time of flight is going to be the same for all these. देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला में भी यही आता है ना, 2u sin theta अपॉन g, तो g ऑलरेडी कांस्टेंट है, एंड u into sin theta is already constant, see it here.
So since this u sin theta is there in this formula of time of flight t here, that means time of flight should be the same for all projectiles. It's correct because height is same, right? चलो, the launch speed is greatest for particle c. देखो लॉन्च स्पीड जो है तो वो अभी लॉन्च स्पीड इज कंपोज्ड ऑफ u cos थीटा एंड u sin थीटा, राइट? तो यहाँ पे u sin थीटा तो सबका सेम है. इससे क्या पता चल रहा है हमको? u sin theta is going to be the same. मतलब vertical component of the velocity here is going to be same for all three projectiles, but horizontal component of the projectile of A here will be somewhat smaller. Horizontal component of the velocity of this projectile B here will be somewhat greater, and for C will be the greatest of all, and that's why we can see that this is the correct option actually. So launch speed of is greatest for the particle C. Okay, but still we'll read the other options here. The horizontal velocity of the component is greatest for the particle C. This is also correct. Okay, the horizontal velocity of the component is greatest for the particle C. Okay, horizontal velocity हम देख रहे हैं यहाँ पे C का सबसे ज्यादा है, B का उससे कम है, A का सबसे कम है, इसलिए तो A थोड़ा नजदीक जाके गिरता है, B और थोड़ा दूर जाके गिरता है, और C जो है वो सबसे ज्यादा जाके आगे जाके गिरता है. एंड चौथा ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा है हमको all above. That is going to be the correct option actually, because see, time of flight is going to be the same for all three. ये correct है. Launch speed is greatest for particle C, ये भी correct है. और the horizontal speed और velocity component is greatest for particle C, ये भी correct है. तो इससे हमको पता चलता है कि all these options are going to be correct. Yes, see this 12th one. A projectile is thrown with the initial velocity which is going to be ai bar plus bj bar. The range of projectile is double the maximum height reached by it. Then, okay, the range of projectile is going to be double that of the maximum height. What can we conclude from this initial velocity? देखो initial velocity का formula क्या होता है? U is equal to ux into I bar plus uy into j bar. यही होता है कि ना initial velocity का formula in terms of I bar and j bar. Ux and ui are the horizontal and vertical components of this u. So since this u bar is already given to be ai bar plus bj bar, what can we conclude is ux is going to be a, okay, and uy is actually going to be b. Yes, but here what is given here is range of the projectile is double the maximum height reached by. मतलब क्या? r is going to be 2 times of h. Here r का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने देखा 2 times of ux into uy upon g बराबर है, और h का फॉर्मूला क्या है? वो होता है uy square upon 2g. करेक्ट है, जिससे अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाता है और हमको मिलेगा, और even gg also gets cancelled, right? And even uy will get cancelled once. Only one uy will be left here, so that we can get that 2ux is going to be equal to uy. Correct hai? And ux is what? It's a here, and uy is what? It is b here. So if we just replace them here, then we can get the relationship between a and b, that is 2a is equal to b, which is already equal there in this option number 3 here, that which is going to be the correct option. चलो ठीक है. Next one, the equation of projectile is y equal to root 3x minus gx square by 2. Then the angle of projection is, it's very simple, y is equal to root 3x minus gx square by 2. This equation can be compared with y is equal to x into tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. याद है? This is the equation of projectile trajectory of projectile. So here the coefficient of x is root 3, but here coefficient of x is going to be tan theta. So if we just equate this tan theta with root 3, then we can conclude that tan theta equal to root 3, and we can conclude that theta is going to be equal to 60 degree, because we know that tan 60 is going to be root 3. So that means the angle is going to be 60 degree, which is option number 2 correct here. Yes. 14th one, the equation of projectile is given as y is equal to 16x
minus x square by 4. The horizontal range is, देखो y is equal to 16x minus x square by 4. This is the equation of projectile. देखो जब प्रोजेक्टाइल रेंज हमको मिलता है, मतलब यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे फिर से टच करता है ग्राउंड को, तो वहां पे x का वैल्यू जो है वो r बनता है और y का वैल्यू 0 बनता है. That means y becomes 0 at this range particle point when x becomes equal to r. तो जब x का वैल्यू r के बराबर बनता है तो y का वैल्यू 0 बनता है. So if you put these values here, put y equal to r and x equal to 0. So what can we get is 0, sorry. X must be equal to r and y must be equal to 0. So if you put these values here, then we get this 0 is equal to 16r minus r square by 4. And if we take this r square by 4 in that side, then we get this r square by 4 is equal to 16r. So that r gets cancelled once. And if we transfer this 4 in that side, then we can get that r is equal to 64 meter. That's it. That's all. Which is going to be there in the option number 3 here. समझा क्या लिख से? अथर्व वो फॉर्मूला उल्टा है. R max is equal to 4 times of H max होता है. Yes, we can also use that. If theta is equal to 45, then whenever theta is equal to 45, we can use that formula, that is R max is equal to 4 times of H max. No problem. Okay, so this is 64 meter obtained here. Yes. चलो नेक्स्ट वन 20 सेकेंड वाला करो. अच्छा उसके ऊपर का भी करो एक बार जरा. 21 वाला करो. Question number 21. If projectile is fired at an angle theta with a horizontal velocity u, then the time of flight is given by. अरे ये तो memory based question है. Its answer is 2u sin theta upon g. It's very simple. Next is the horizontal range of a projectile is maximum. Then the angle of projection must be pi by 4. It is again the memory based question. Yes. Two stones are projected with same speed but making different angles with horizontal. Okay. Their range are equal if angles of projection of one is pi by 3 and its maximum height is y1. Then the maximum height of the other will be. Yes. How can we get that? One particle which is projected horizontally is at an angle pi by 3. Pi by 3 मतलब कितना हो गया वो? 60 डिग्री हो गया. करेक्ट है? तो 60 डिग्री पे एक पार्टिकल हमने थ्रो किया, उसका जो मैक्सिमम हाइट है तो वो दिया हुआ है y1. ओके. बट अगर सपोज सेम रेंज है, okay, two stones are projected with the same speed but making different angles with the horizontal and their ranges are equal. What do you mean by this? Ranges are equal. तो अगर रेंज इक्वल है तो दूसरे का एंगल कितना होना चाहिए? सेम स्पीड पे अगर हमको सेम रेंज मिलता है तो दूसरे का एंगल होना चाहिए 30 डिग्री. Already we have seen that whenever the two projectiles are thrown in such a way that they are thrown with the same speed and they have the same range, that means they must be thrown with an angle theta and 90 minus theta. Okay, remember this. So इसलिए यहाँ पे अगर एक का एंगल pi by 3 दिया हुआ है तो दूसरे का एंगल कितना मिलेगा हमको? pi by 6, मतलब ही 30 डिग्री मिलेगा. तो पहले वाले का रेंज कितना है, हाइट कितना है? y1 है. What is the formula for height h1? It is u square sin square theta upon 2g. तो y1 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? y1 के लिए बनेगा u square sin square 6t upon 2g. बराबर है? But if you want to find out this y2 here, that is the maximum height obtained by the second projectile which is thrown at an angle 30 degree, then we can get that y2 is actually equal to u square into sin square 30 upon 2g. And now if you want to find out the relationship between y1 and y2,
Then just replace this, take the ratio of y1 and y2 here. If we take y1 upon y2, then we can get y1 upon y2 is equal to, so you 30 upon 2g, so that this u square gets cancelled, 2g gets cancelled, and what we are left with is simply y1 upon y2 is equal to sin square 60 upon sin square 30. That's it. That's it. So sin square 30 60 मतलब कितना, √3/2 और उसका स्क्वायर, और sin square 30 मतलब कितना, तो 1/2 और उसका स्क्वायर, जो कि ये बनता है √3/4 और ये बनता है 1/4. So that we can get just cancel this 4 here, so that we'll be left with √3 here only. So that we can get this √3 upon 1, matlab hi √3. So we can get that y1 upon y2 is equal to √3. What does it mean? Sorry, not √3. स्क्वायर किया ना हमने, तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, वो 3 बन जाएगा एक्चुअली, not root. So after squaring, this √3 whole square becomes 3 here, and hence we can just cancel 4 and get this simplified as 3 only. Okay, so y1 upon y2 is 3, means y1 is equal to 3y2. If since y1 equal to 3 times of y2, we can say y2 is going to be equal to y1 upon 3 as a final. Okay, so this is all about the questions in level 1. I hope you will do the remaining questions in level 1. Okay, try to do the remaining questions in level 1 so that we can continue with level 2 next time. Okay, so let us stop here. Yes, y2 should contain cos 30. Not cos 30, should be cos 60 only. It's okay, no? Then cos 60 means only sin 30. Okay, Atharva. See here, y2 के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हम थीटा लेते, कल जो हमने फॉर्मूले लिखे थे ना, तो उसमें हमने थीटा लिया था और दूसरे के लिए 90 माइनस थीटा लिया था, तो 90 माइनस थीटा डालने से y2 के लिए u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, ये भी करते हैं तो हमको मिलता है u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. and it's okay na, theta is already 60 degree here, so if we put this cos square 60, we are going to get the same as sin square 30. Cos square 60 is going to be same as sin square 30, no doubt. Chalo, theek hai, so let us stop here. Thank you all of you.